Now we will discuss principle of affinity chromatography. We will see how this works, how principle, how this affinity chromatography works. So we know that affinity chromatography works on the basis of a reversible interaction between a protein and its specific receptor. This specific receptor or ligand is bound with stationary phase, while particular protein is present in the sample. So when we pass this sample through the column, what happens? That particular protein or some other molecule that gets bound with its ligand or receptor, which is present, which is attached with the stationary phase. And this binding of that protein with its ligand, this is reversible. So first it gets attached, it is bound, and then we can separate it by changing the conditions. The stationary phase is bound with some substrate or with some antigen, for example, for separation of an enzyme or some antibody from the sample. One component of a mixture may have high affinity with ligand which is attached with solid matrix in the stationary phase. So there may be different proteins present in the sample. What happens is one particular protein that is bound with its receptor, with its ligand. Why it is bound with? Because it has high affinity for that particular receptor or for that particular ligand. While other components, while other proteins present in the same sample, they may not have that affinity. That's why they will not be bound with the ligand or with the receptor. The component which is trapped in the column, while all other components, they are washed down. So one particular component, one particular protein which has high affinity with the ligand, that is trapped in the column, while others, they are washed down, they are washed away. This is the diagram which explains this chromatography. So we can see here on the left side, it's loading, how sample is loaded. Then in the middle, we can see how it is separated. And then on the right side, we can see how the sample is eluted. It is later on, it's collected. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोडिंग जब होती है, तो बल्कि इससे पहले हम देखेंगे कि कॉलम जो है वो कैसे यहाँ क्या शो करता है. तो कॉलम में जो जिसमें कि स्टेशनरी फेज है, इसमें हम देख सकते हैं इमोबिलाइज्ड रिसेप्टर है जो कि स्टेशनरी फेज के साथ जो वो बाउंड है. तो देयर इज प्रेजेंट इमोबिलाइज्ड लिगैंड और इमोबिलाइज्ड receptor which is bound with stationary phase. Now, target analyte is added. It's a mixture of different substances from which we want to separate our own particular protein. In this case, we can see this target analytes which is added. It is consisted of red proteins, green proteins, purple proteins, yellow proteins. And we'll see that this immobilized receptor or ligand that is specific for red component of this mixture. तो इसमें से जो डिफरेंट तरह का जो मिक्सचर है जिसमें 3-4 कलर के कंपोनेंट्स हैं, इनमें से रेड कलर का जो कंपोनेंट है वो इमोबिलाइज्ड रिसेप्टर के साथ लिगैंड के साथ बाइंड करेगा. तो मिक्सचर लोड किया गया, उसके बाद सेपरेशन कैसे हुई? चूंकि जो रेड कलर का कंपोनेंट है, जो रेड कलर की प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल इट हैज़ हाई एफिनिटी विद द इमोबिलाइज्ड रिसेप्टर, तो ये यहाँ उसके साथ बाइंड कर जाएगा. जैसे हम देख रहे हैं कि रेड कलर की जो प्रोटीन है, जो कंपोनेंट है, जो मॉलिक्यूल हैं, वो उस लिगैंड के साथ बाउंड हो गए और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो उस कॉलम में से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. दे गेट वॉश्ड फ्रॉम द कॉलम. अब रेड कलर की जो कंपोनेंट है, जो प्रोटीन है, वो स्टेशनरी फेज के साथ बाउंड है. अब हम कंडीशंस चेंज करते हैं तो यही जो रेड कलर की जो प्रोटीन होती है वो कॉलम में से सेपरेट हो जाती है. एंड देन this can be collected at the end of the column. This can be shown on the right side where it is written elution. So पहले कंपोनेंट सारे गुजर गए, उसके बाद अब रेड कलर का जो प्रोटीन है, रेड कलर का जो कंपोनेंट है, उसको हम एल्यूट करके उसको हम, ये जो एल्यूशन का प्रोसेस होता है, जाहिर है पहले भी बताया कि ये जो बाइंडिंग होती है पर्टिकुलर प्रोटीन की उसके लिगैंड के साथ, ये रिवर्सिबल होती है. जब हम कंडीशन चेंज करते हैं, हम पीएच चेंज करते हैं, हम आयनिक स्ट्रेंथ चेंज करते हैं, हम टेम्परेचर चेंज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यही जो बाउंड कंपोनेंट होता है अपने लिगैंड के साथ ये सेपरेट हो जाता है और इसको हम एल्यूट करके अलहदा कर सकते हैं.
تو اس طرح اس کو سپریٹ کیا جا سکتا ہے. Interactions between a ligand and the target molecule may be electrostatic, may be through hydrogen bonding, or may be through hydrophobic interactions. تو ڈفرینٹ طرح کی انٹریکشنز ہو سکتی ہیں، اور یہ جو انٹریکشنز ہوتی ہیں یہ ریورسبل ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہم کنڈیشن چینج کر کے وہ جو باؤنڈ لیگینڈ کے ساتھ جو مالیکیول ہوتا ہے اس کو، جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں. فار ایلیوشن آف مالیکیول آف انٹرسٹ فرام دا کالم the interactions can be reversed either by using a competitive ligand، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ competitive ligand ہم یوز کرتے ہوئے اس کو سپریٹ کر لیں، یا ہم یہ چینج کر کے ان ایکسٹینٹ چینج کر کے یا پولیرٹی کو چینج کر کے ہم وہ جو باؤنڈ لیگینڈ ہوتا ہے، باؤنڈ جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو لیگینڈ سے سپریٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کی جو بائنڈنگ پارٹنرز یہاں یوز ہوتے ہیں، اس میں اینٹی باڈی اینٹیجن بائنڈنگ پارٹنر ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر لیگینڈ اینٹیجن ہے اس کے ساتھ اینٹی باڈی باؤنڈ ہوگی جس کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح لیگینڈ سبسٹریٹ ہے تو اس کے ساتھ باؤنڈ انزائم جو ہوگا اس کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ظاہر ہے ایک پرٹیکولر جو ہارمون ہوتا ہے وہ بھی ریسیپٹر کے ساتھ جو باؤنڈ ہے اس کو بھی سپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ طرح کے بائنڈنگ پارٹنرز ہے وہ یہاں پہ یوز کر کے ہم ایک کمپاؤنڈ میں، ایک مکسر میں سے ایک کمپاؤنڈ کو سپریٹ کر سکتے ہیں.